discuss? So just tell me what should be the answer. Question number 7. Have you done both 7 and 8 or only 7? Okay. So tell me 7. What should be the answer 7? What would you advertise? How many vacancies you have to advertise? 4. Although 5 persons have retired, but the department decided we'll fill up only 4. That means there is no work. Okay? So what will be the breakup of 4 vacancies? Tell me. 1 ST, 1 OBC, 2 UR. Okay. What is your answer? OBC 1, unreserved 3, 0 scheduled tribe. This is your answer. What is your answer? Same. 1 ST, 0 OBC, and 3 unreserved. Okay. What's your answer, madam? Huh? First, that means 1 ST, 1 OBC, 1 UR. Yes. 2 ST, 0 OBC, and 2 UR. Huh? So you are also saying 2 ST, 1 OBC, 2 UR. Backlog? Why I don't know? So that means you don't require the 5th now. So where is the question of backlog? No, but where is why you are saying backlog? Where? Next time I don't know. Your department may vanish next time. We are talking of this year. Next time I don't know what will happen. 2 ST, 2 UR. Okay. Yes. Anybody? What's your answer? Second one? Your answer is second one. Okay. 0 ST. Okay. Yeah, I want everybody to respond. Because if you take a stand, you understand. If you don't take a stand, you don't understand. Yes. First one? 1 ST, 1 OBC, 2 UR. Third one? 1 ST, 3 UR. So let us put it like this. पहले वाला कौन बोल रहा है? पहले वाला आंसर किस किस का है वो हाथ खड़ा करें. वैसे नहीं बोल रहे जब दूसरा का बता रहे हैं. So let us put many like this. ठीक है? दूसरा वाला कौन बोल रहा है? दूसरा वाला 0 ST, 3 UR, 1 OBC. Only 1%. Only 1%. Okay. तीसरा वाला 1 ST, 3 UR. ये कौन बोल रहा है? 1 ST, 3 UR. 1 ST, 3 UR 4 लोग बोल रहे हैं. 1, 2, 3, 4. और 2 ST, 2 UR. 1 और 2. ठीक तो प्रॉब्लम नहीं. लेकिन आप देख लीजिए कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये. तो कितने आंसर हैं? अभी सोचिए कि अब 4 की जगह 40 वैकेंसी भरना पड़े किसी डिपार्टमेंट में तो 300 आंसर होंगे. फिर जब 4 वैकेंसी में कोई यूनियनिमिटी नहीं है, 4 वैकेंसी भरना है, तब भी हर आदमी अपना अपना बोल रहा है, कुछ बोल रहा है. ऐसी ऑफिस चलता है. ऑफिस में आप जाएंगे ऐसे होता है, हर आदमी का आंसर ठीक लग रहा है, समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा. तो तब वो देखते ही है कि जो बोल रहा है वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है. समझ में तो किसी को नहीं आ रहा होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो कह रहा है ठीक ही कह रहा हो, ऐसी छाप दो. आपको कुछ चेंज करना तो भी कर लो. नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं. इंडिया है, फ्रीडम है, जैसा बने. इस कंट्री में ही तो सबसे मजा है. जैसा मुझे बोल दो, जो मन में आ रहा बोल दो, मतलब बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. देखिए हमारा कितना पोस्ट है हमारे पास? नहीं, पोस्ट कितना है? 75 पोस्ट है हमारे पास. तो अगर हमारे पास 75 पोस्ट है
तो रोस्टर बनेगा, रजिस्टर बनेगा, रजिस्टर बनेगा, ठीक है। वैसे तो आप यहां से भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि अगर किसी डिपार्टमेंट में 75 पोस्ट है तो कितने SC ST OBC होने चाहिए। देखिए अगर आप 75 पे जाएंगे यहां पे, तो इट इज टेलिंग मी दैट वी वांट 1 शेड्यूल कास्ट, 0.5 विल बी इग्नोर्ड, वी वांट 9 शेड्यूल ट्राइब्स एंड वी वांट 20 OBCs, फ्रैक्शंस विल बी इग्नोर्ड। यहां से भी कैलकुलेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 75 पोस्ट है तो वी वांट 1 SC, वी वांट 9 शेड्यूल ट्राइब्स एंड वी वांट 20 OBCs। क्या ये लोग हैं हमारे पास? हाँ, 21 कहाँ है? 20 है, देखिए यहाँ 21 का रखा है, बिल्कुल सही। मतलब डेटा हमारा क्या शो कर रहा है कि हमारे पास कितने OBC हैं? अच्छा 20 है सर, 20 है सर, 20 है ना? नहीं देखिए दे रखा है आउट ऑफ 75% देयर इज 1 SC%, R हो गया है बट इट इज नॉट टाइपोग्राफिकल, चेक कर रहा हूँ। आउट ऑफ 75% देयर इज 1 SC%, 9 ST%, 20 OBC% इन पोजीशन, ऑल रिक्रूटेड बाय रिजर्वेशन। ठीक है ना सर, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 21 नहीं है, 20 इन द ईयर 2020। तो जो हमें चाहिए वो है हमारे पास, जितना चाहिए उतना है हमारे पास, परफेक्ट है रिजर्वेशन। बट इन 2020 क्या हो रहा है? 2020 में हैं 5 लोग रिटायर हो रहे हैं। कौन रिटायर हो रहे हैं? 2 ST लोग जा रहे हैं, 1 OBC आदमी जा रहा है और 2 जनरल आदमी जा रहे हैं। ठीक है ना? इसमें किसी को डाउट है? बोलिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। यू कैन आर्ग्यू विद मी, देयर इज नो पॉइंट एग्रीइंग विद मी। तो आपके पास 5 लोग जा रहे हैं, 2 शेड्यूल ट्राइब जा रहे हैं, 1 OBC जा रहा है और 2 जनरल जा रहे हैं। 5 लोग चले गए, लेकिन डिपार्टमेंट कह रहा है काम वाम नहीं है, 4 ही भरो। तो अगर 75 में से 5 लोग जा रहे हैं और 4 ही भरना है, तो कार्टर स्ट्रेंथ तो 74 का हो गया। मेरे कार्टर में कितने लोग होंगे अगर मैं 4 लोगों को रिक्रूट करता हूं तो? 74 होंगे, 75 थोड़ा ना होंगे। और अगर 74 लोग मेरे पास कार्डर में होने वाले हैं, तो मेरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC का एंटाइटलमेंट ही चेंज हो जाएगा। If there are 74 people in the cadre, I don't require 20 OBCs. I require only 19 OBCs and 8 scheduled tribe. अगर मेरे कार्डर में 75 लोग होते तब तो मैं 2 शेड्यूल ट्राइब, 9 शेड्यूल ट्राइब और 20 OBC लाता। लेकिन मेरा कार्डर स्ट्रेंथ इज नाउ बिकमिंग 74. If it becomes 74, then I require how many OBCs? 19. And 19 OBCs are there. Even after retirement of one OBC, 19 are still there. So why should I bring more OBC into the system? शेड्यूल ट्राइब कितने चाहिए मुझे? 8। 2 शेड्यूल ट्राइब जाने के बाद 7 बचे हैं, तो मुझे एक ही शेड्यूल ट्राइब लाना है। तो 4 वैकेंसी में से मेरे को 1 शेड्यूल ट्राइब लाना है और 3 अनरिजर्व लाना है। ये होगा ब्रेकअप, बिकॉज माई कार्डर स्ट्रेंथ इज 74 and not 75.
बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। माइक नहीं, माइक। I was looking at the chart where OBC. नहीं, are you asking this question or something? Yeah. Okay. That 74th entry, last column OBC is mentioned as 20. So I took OBC 20. So that's not 19. 74 crore. So you will not, this is for the purpose of rotation. Okay. This you will follow for the purpose of rotation. So for register, we have to follow the number. For registry, how will you calculate? You will simply take 74 and calculate 27% of 24. 27% of 24 is what? 19. 19.98. Fractions will be ignored. Schedule type 8.8. At 74, kindly see schedule type is 8.8. So when you will follow the register system, you will simply calculate the Carter strength into the percentage and ignore the fraction. Am I clear on this point? Any doubt? Anybody has any doubt? I would request you to just take out chapter 4 now, which you did not read. It would have been much better had you read it. So, that means here that one post is abolished. Yeah, of course. Okay, so when out of 5 you want to fill up only 4, what does that mean? It means that you don't want the 5th post. Can that happen? I'm just asking, this is hypothetical from my perspective. But just now you told me in the morning it happens every day in Goa. No. I'm asking this question not about reducing. Can we have 5 posts otherwise which are unfilled? 5 vacancies. But, 5 vacancies, sorry. And fill up only 4 and keep that one. If you keep that vacant, that means you don't require it. In fact, I am sure you know the government instructions are any vacancy lying more than 2 years vacant is abolished. Why it is so? Because that means if an organization can work without that post, it doesn't require that post. Anyway, that is not the issue before in this question. In this question, the issue is when the Carter strength is increased or decreased. How do you apply reservation? That is the main takeaway from this question. Main takeaway is the question is Carter strength suddenly decreases, as this gentleman was asking me in the morning, sir, 48 से बढ़ गया सर, बढ़ गया तो फिर कैसे बढ़ रहा है? ऐसे ही बढ़ रहा है, काम आपके पास आ गया ज़्यादा, तो बढ़ गया. फिर ऐसा नहीं, जब बढ़ रहा है तो घट भी सकता है फिर. But today morning you asked me this question or not? I had to spend almost 10 minutes answering this question. कि उन्होंने बोला सर 49 के बाद वो हमारा पोस्ट बढ़ गया. तो मैंने कहा ठीक है बढ़ा लो. फिर अगर बढ़ सकता है तो घट नहीं सकता क्या, ये बताइए पहले मुझे. In fact, times are coming जब घटने का ही टाइम आएगा. Government is reducing the presence of government in unnecessary areas. Service sector is all being slowly shut down. Air India has been sold. तो कल को हो सकता है टूरिज्म डिपार्टमेंट आधा बेच दे. So there will be always chance of increasing and decreasing. Am I clear? So let us try to understand this question was on increase of Carter strength or decrease of Carter strength. लोग मुझसे पूछ रहे थे ना सुबह कि सर बढ़ जाता है घट जाता है. So this is how we will have to calculate. We will have to see what is the Carter strength every year. Normally I was telling you कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट में पोस्ट बढ़ता नहीं है घटता नहीं है, लेकिन आप तो मुझे उल्टा बोल रहे हैं. आप तो सुबह से ये बोल रहे हैं कि सर हमारे यहाँ बहुत बढ़ जाता है. अब जब मैं वो एक्सरसाइज करा रहा हूँ आप तब आप पूछ रहे हैं सर कैसे बढ़ जाता है. सो कल को आपके कॉलेज में कोई नया डिवीजन बनता है और 10 पोस्ट एक्स्ट्रा बन जाता है
So your Carter strength is no longer what it was 1 year ago. It changes. You have to recalculate the entitlement of scheduled caste, scheduled tribe, OBC based on the revised Carter strength. आप ट्राई करिए सर, आप एक बार ट्राई करिए सॉफ्टवेयर सर, कोलैप्स हो जाएगा सॉफ्टवेयर। इसमें इतने फैक्टर्स हैं, अभी आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर क्या बनेगा, जो हमें समझ में आएगा वही तो बनाएंगे ना सॉफ्टवेयर। तो देखिए कितने फैक्टर्स हैं इसमें। You can write the program software. मारना है मुझे, बिल्कुल नहीं करना ये काम मुझे, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर बनाया, कुछ फेल हो गया, नेशनल कमीशन के सामने खड़े रहो, उनकी डांट खाते रहो। अभी देखिए, वन ऑफ माय कोलीग हैज जस्ट पॉइंटेड आउट एट पॉइंट नंबर 12 देयर इज अ मिस्टेक। गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने जो अभी रोस्टर सर्कुलेट करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये गलती नहीं है। आपके यहाँ पे गलती है कि 12 नंबर पॉइंट ओबीसी को जाना चाहिए था। 12 नंबर पे ओबीसी का कितना पॉइंट आ रहा है बताइए? 3.24। 11 पे 2.97 आ रहा है, इट गोज टू यूआर, इट इज ओके। लेकिन 12 पे इट इज बिकमिंग 3.24। 12 शुड हैव गॉन टू ओबीसी, लेकिन यहां पे 13 हैज गॉन टू ओबीसी, सो इट शुड हैव बीन 12 एक्चुअली। नॉट अ सीरियस मिस्टेक, बट इन दिस कंट्री दिस स्मॉल मिस्टेक इज इनफ टू वेज अ वॉर। सो जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा वो तो वही बनाऊंगा ना जो मुझको समझ में आएगा। मैंने प्रोग्राम गलत बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी जो चल रहा है चलने दीजिए। बट इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? यू वांट टू आस्क मी बिकॉज आई एम बेसिकली ऑफ अ पर्सन दैट वी हैव 2 days, वी कैन डिस्कस एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बट इफ यू डोंट डिस्कस सम ऑफ द बेसिक थिंग्स इन दिस 2 days, you know, we will not get anything in the hand at the end of the day. So I am very prone to discussing concrete questions. So in this question, if you want to ask me anything, you are most welcome. So I repeat again, the sanction strength was 75, but next year the sanction strength has become 74, and my entire calculation will depend on 74. And therefore I don't require 9 scheduled tribe, I require 8. I don't require 20 OBCs, I require 19. If they are already there, I will not bring anybody else. Am I clear? Okay, so I would like to just open chapter 4. Hello. Now, can anybody read? Mike, this is that was a. Can anybody read chapter 4? Now, what is the heading of chapter 4? Anybody? Whoever feels like there is no compulsion. If you don't read, I will read, but I want to save my voice a little. What is chapter 4? It is determination of reservation quota. So, how do you determine reservation quota? In the government of India, we have a different percentage. So, therefore, it is based on that. So, it's just read it, paragraph 4.1. Number of posts reserved for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes in a cadre having more than 13 posts shall be determined by multiplying the cadre strength by the percentage of reservation prescribed for the respective categories. While doing so, fractions, if any, shall be ignored. Alright? So in this case, we had 74 posts. From 75, it got reduced to 74. The moment it got reduced from 75 to 74, there will be one reduction in scheduled tribe, one reduction in OBC. Can you again take out question number 1 and 2 which you did in the morning? In question number 1, what was the answer you were getting? Remember?
Yeah, how did you get it? By multiplying the Multiplying. Carter strength by the percentage. Yes, sir. And then I took another question that 5 more posts have been added. Added. What was the answer? Was there any change in entitlement of Yes, scheduled sir. tribe? Yes, sir. Yes. SC was Now you can calculate from here also, which is very good. Now if you have 138 posts, although the calculation ends at 100, but you can do it. At 138 posts, the entitlement was 16 for scheduled ST, scheduled ST. tribe. But the moment you become 143, the scheduled tribe becomes 70. 70. So you have to simply multiply the Carter strength by percentage when the Carter strength is 50 or more. In Government of India, it is 14 or more. So read that. I read the chapter this 4.1 once again for you. Number of posts reserved for scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes in a cadre having more than 13 posts shall be determined by multiplying the cadre strength by the percentage of reservation prescribed for respective categories. For Goa, how will you read this sentence? Instead of more than 13 posts, you will write more than 49 posts. That means 50 and above. So whenever you have 50 and above posts, you will multiply the Carter strength by the percentage and find out. So this calculation can also be used for that. Suppose you have 79 posts. How many scheduled tribes should be there? 9. Suppose you have 67 posts. How many scheduled tribes should be there? 8. So this is a very quick way of finding out. Am I clear? Now, please read 4.2. If the number of posts in a cadre is 2 or more than 2, but less than 14, How will you read it for Goa? 49, if the number of posts in a cadre is 50 or more than 50, but less than, 2 or more than 2. Very good, excellent. You got it. If the number of posts in a cadre is 2 or more than 2 but less than 50. Reservation is provided as per L-shaped rosters prescribed by Department of Personnel and Training OM number so and so dated 2nd February 1997. These L-shaped rosters are nothing but 14 points given below. So you will read it, these L-shaped rosters are nothing but these 100 points given below. So when the Carter strength is 2 to 49, you will follow this 100 point cycle. And instead of our cycle, this cycle is given to you by Government of Goa. Am I clear on this point? So please understand, we have two types of system, rosters and registers. Format I discussed with you yesterday. We will see all the format again, not an issue. But this is how we will calculate. So now we will again go back to question number 8. Question number 8. क्या आंसर आ रहा है आपका? हैं? फिर से अलग अलग आ रहा है? देखिए ये तो पिछली बार का आंसर था आपका. नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इस पर. इतने सारे आंसर एक क्वेश्चन के मैंने आज तक नहीं सुने. ठीक है? और एक भी सही नहीं था इसमें से. लास्ट था? ये देखो चार लोग कौन थे वो? अरे इनको वो पार्टी दो. आशांक जी पुरुष कराओ, पुरुष शाम को. ये 4 लोगों का सही आंसर है. ये बहुत बड़ा परसेंटेज है. 60 लोगों में से 4%, 4 लोग 1% इंडिया में सक्सेस रेट है. बहुत बड़ा आंसर है ये. तो ये 4 लोगों का आंसर देखिए 1:3 हुआ. लेकिन ये आंसर आपका सही लॉजिक से गलती से सही है. Percentage you calculated. Very good, very good, very good. Yes. So now, what is the position of? We have 74 posts.
It is just the opposite of the question we have done earlier. कितने पोस्ट है हमारे पास? 74. 74 में से कितने SC बैठे हैं? SC. शेड्यूल ट्राइब कितने बैठे हुए हैं? हैं? 9. OBC कितने बैठे हुए हैं? 90. इतने लोग बैठे हुए, यही गलत है ना? ये गलत ना हो रहा कि मैं देखी ना मेरा क्वेश्चन आ रही है। अब कितने लोग जा रहे हैं इसमें से? 4 लोग जा रहे हैं, लेकिन आ कितने रहे हैं? तो कार्डर स्ट्रेंथ तो 75 का हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा कई बार इधर उधर करने में भी। तो 75 का कार्डर हो रहा है, तो अगर 75 का कार्डर होने वाला है तो माय कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन 75, नॉट ऑन 74. दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड फाइंड आउट 75 में से कितने SC ST OBC होने चाहिए। कल आपको याद होगा मैंने आपसे ये कहा था इफ इट इज नॉट क्लियर इन माय माइंड कितने होने चाहिए तो मेरा सब कैलकुलेशन गलत हो। तो 75 में से कितने SC ST होने चाहिए? शेड्यूल कास्ट तो 1 ही होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब 9 ही होने चाहिए और OBC 19 की जगह 20 होने चाहिए। If my cadre strength is going to be 75 and it is going to be 75 because I am not recruiting 4, I am recruiting 5 persons. Now if I want 20 OBCs, then how many OBCs have left out of 19? No OBC is left. So जब मैं ये 5 वैकेंसी एडवर्टाइज करूंगा तो उसमें से एक तो मुझे OBC लाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे कितने OBC चाहिए और है कितने? 19 बैठे हैं, I want 20. How can I make it 20 if I reserve 1 out of 5 for OBC? शेड्यूल ट्राइब कितने चाहिए मुझे? 9. इस 9 में से कौन छोड़ के गया है? एक आदमी छोड़ के गया है, तो एक शेड्यूल ट्राइब लाना पड़ेगा मुझे। शेड्यूल कास्ट लाने की कोई जरूरत है 5 में से? नहीं है, क्योंकि जितना कितना चाहिए, एक बैठा हुआ, तो बाकी 3 किसको जाएंगे? And this is what I will advertise. तो सबका आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है? यही आ रहा होगा ना? झूठ में बुरे मैंने बता दिया, आप यही बोलेंगे। Am I clear? This is every year अगर आपका यहाँ कार्डर स्ट्रेंथ चेंज हुआ तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। It's not tough at all. You have seen it is so simple. मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? तो बोलिए कोई क्वेश्चन किसी का है? मैंने जानबूझ के कार्डर स्ट्रेंथ ऐसा लिया है जहां पे कुछ ना कुछ होने वाला है। 75 क्यों लिया मैंने? देखिए 74 और 75 में कितना फर्क है। 74 तक आपको 8 शेड्यूल ट्राइब 19 OBC चाहिए, 75 में आपको 9 OBC चाहिए, एक एक्स्ट्रा चाहिए। ऐसा सिचुएशन और कहीं आ रहा है? आ रहा है। यहां देखिए 66 67 में 66 में कितने शेड्यूल ट्राइब चाहिए बताइए? 7 और ओबीसी आपको 17 चाहिए। लेकिन अगर आपको 67 पोस्ट है 66 की जगह, तो आपको शेड्यूल ट्राइब एक एक्स्ट्रा चाहिए, ओबीसी भी एक्स्ट्रा चाहिए। ओके? बोलिए। तो ऐसा बहुत जगह होगा, मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया ताकि आपको ये फंडा क्लियर है। So once again, we have 2 types of system, rosters and registers. Format for register we saw yesterday, format for rosters we saw yesterday. Roster हम follow करेंगे when the cadre strength is 2 to 49 और register हम follow करेंगे when the cadre strength is 50 or more. Is it okay? So now let us do one small exercise on
रोस्टर्स। तो आप लास्ट पेज में जो एक्सरसाइज है उस पे आ जाइए, लास्ट पेज। बिल्कुल लास्ट पेज पे आ जाइए। और इस क्वेश्चन को कर डालिए, खुद करना है और साथ वाले के साथ क्या करना है, डिस्कशन। अकेले बिल्कुल नहीं करना है। रोस्टर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। यहां किसी को डाउट तो नहीं है ना? हाँ, किसी को भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा? ये मिस्टेक नहीं है, गलती निकाल, फैकल्टी का मिस्टेक निकालने की कोशिश मत करना कभी आप। Will it matter who is going to die? Tell me. We should only see somebody should die. Who dies doesn't matter. तो कितने स्टाफ का ड्राइवर है आपके पास? 7। उन 7 लोगों का नाम कहां पे लिखना है? फॉर्मेट आपको दे रखा है, तो फॉर्मेट में आपने नाम लिख दिया A B C D E F अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग। सारा डेटा आपको भर रखा है, सिग्नेचर कर रखा है, सब कुछ तैयार है। अब नेक्स्ट ईयर इन 2021 2 लोग चले जाते हैं नौकरी छोड़ के। कौन? ए और डी चले जाते हैं। तो मुझे कैसे भरना है उसको बताइए। यहां पे एक पॉइंट क्या है? ओबीसी का है ना, तो कौन से पॉइंट से भरना है फिर? 8 और 9। वेरी गुड, बिल्कुल गलत। 50% रूल वायलेट हो गया, मर गए आप, कोर्ट केस हो गया आपका। कोर्ट केस हो जाएगा। जैसे आप एड्रेस करेंगे, हो सकता है किसी को समझ में नहीं आए, फिर कोई आरटीआई करेगा, सिलेक्शन नहीं होगा उसका, तो उसे पता लगेगा यार ये तुमने पॉइंट नंबर 8 और 9 देख लिया, रूल 16(4) भी लगाया नहीं, तब वो उसको चैलेंज कर लेगा कोर्ट में। कोर्ट बोलेगी भी कैसे कर दिया आपने, आप बता नहीं पाएंगे, तो वो सारा कुछ स्टे हो जाएगा। फिर 2-3 साल बाद आप खाली पड़ा रहेगा वो, फिर आप पूछते रहेंगे क्या। तो करना क्या है? 8 will be filled by OBC, 9 ST will be carried forward. So 9 will be treated as UR because both you cannot advertise as reserve. तो जो पहला वैकेंसी आएगा ओबीसी का, उसको ओबीसी से भरेंगे। बाद वाला एसटी वाला वैकेंसी will be treated as UR and it will be carried forward to the next year. तो क्या एडवर्टाइज करेंगे आप? एक ओबीसी और एक यूआर। अब यूआर में शेड्यूल ट्राइब भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। Am I clear? तो उसका नाम, जो भी 2 लोग आएंगे उसका नाम लिखेंगे कहां पे हम? 8 और 9 पे। 8 और 9 पे तो लिखने, और जगह कहां है वहां पे लिखने। ठीक है ना? Am I clear? बोलिए, किसी को डाउट है तो बताइए।
उसके बाद क्या करेंगे हम, अगले साल क्या वैकेंसी आ रहा है, अब देखिए बी नौकरी छोड़ के जा रहा है, पॉइंट कौन सा आ रहा है, ईडब्ल्यूएस का, लेकिन हम तो उसको एसटी का मान चुके हैं, याद है ना आपको, एसटी का मान लिया है, क्योंकि अगर हमने नेक्स्ट पॉइंट एसटी को शिफ्ट किया तो ईडब्ल्यूएस विल हैव टू शिफ्ट नेक्स्ट, तो एसटी का मान लिया तो एसटी से भर सकते हैं इसको। सिंगल वैकेंसी याद है आपको, कल आपको याद है हमने सिंगल वैकेंसी का पढ़ा था, नेक्स्ट ईयर इवन इफ देयर इज अ सिंगल वैकेंसी इट विल बी फिल्ड, याद है ना, ये भूल गए, बहुत जल्दी भूल गए आप लोग। कल हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट ईयर इवन इफ ए सिंगल वैकेंसी कम्स इट विल बी फिल्ड बाय रिजर्व, सो इट विल बी फिल्ड बाय शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जब बी नौकरी छोड़ के जा रहा है तो हम किससे भर रहे हैं, जो भी पॉइंट नेक्स्ट आ रहा है, पॉइंट नंबर वैसे 10 ईडब्ल्यूएस के लिए था, लेकिन इट विल बी ट्रीटेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब, क्योंकि पहले हम शेड्यूल्ड ट्राइब को लेके आए, पिछले साल शेड्यूल्ड ट्राइब को नहीं भरा था, सो सिंगल वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय शेड्यूल्ड ट्राइब। ऑलराइट, अब इसके बाद 2023 में क्या हो रहा है, नहीं 2023 में 2 वैकेंसी आ रहा है, एफ मरने वाला है, नहीं मरा तो मरेगी तो बच गए, यही तो मजेदार बात है, अगर वैकेंसी आए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हमें तो तब भरना है, रिजर्वेशन का क्वेश्चन कब आएगा, जब वैकेंसी भरना है, तो मिस्टर एफ मर गया और कोई भी मर जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट किसका आएगा, पॉइंट नंबर कौन सा आएगा, पॉइंट नंबर आएगा 10 और 11, इजंट इट, नहीं सॉरी 11 और 12, तो 11 विल बी ट्रीटेड एज ईडब्ल्यूएस, 12 ओबीसी विल बी फॉर ओबीसी, लेकिन दोनों हम इस साल भी रिजर्वेशन नहीं कर सकते, so 11 will be filled by EWS, 12 OBC will be carried forward to the next year because we cannot apply 50% limit. So 11 will be EWS, 12 will be UR और OBC को हम carry forward कर देंगे next year. Is that okay? Am I clear on this point? So देखिए हम जब ये जो रोस्टर है उसको हम कैसे करते हैं, जो पॉइंट नेक्स्ट आ रहा है उससे भर रहे हैं, लेकिन अगर ये बड़ा वाला रजिस्टर होता तो इसमें हम पॉइंट नहीं देखते, देयर इज नो पॉइंट, हम सिर्फ ये देखते नौकरी छोड़ के कौन जा रहा है, जैसे अभी हमने वो एग्जांपल करा, ये जो एग्जांपल करा 74 वाला, डिड वी सी एनी पॉइंट इन द रोस्टर, देयर इज नो रोस्टर इन दैट, इट्स अ रजिस्टर, कौन किस कैटेगरी का आदमी जा रहा है उस कैटेगरी से भरना है, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू 50%। बताइए कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, प्लीज फील फ्री। सो वंस अगेन सी व्हाट इज द फॉर्मेट, फॉर्मेट हमारा ये है, रजिस्टर का फॉर्मेट क्या है, दिस इज द फॉर्मेट फॉर रजिस्टर, और रोस्टर का फॉर्मेट क्या है आपको याद है, रोस्टर में कितने कॉलम है, 8 कॉलम, एक्स्ट्रा कौन सा कॉलम है, सॉरी दिस इज द फॉर्मेट फॉर रोस्टर, दिस इज द फॉर्मेट फॉर रोस्टर, इसमें हम नाम लिखेंगे जैसे जैसे लिखा हुआ, ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 1 क्या है, गोवा में पॉइंट नंबर 1 इज फॉर विच कैटेगरी, UR, सेकेंड इज फॉर UR। अब आप लोगों ने एक चीज देखा है क्या हुआ गलती, मैंने जो आपको एक्सरसाइज दिया उसमें पॉइंट नंबर 12 मैंने ओबीसी के लिए लिखा है, लेकिन आपके वो उसमें ओबीसी नहीं है वो पॉइंट, और आप लोगों ने कुछ नहीं देखा, अब देखिए मैंने जो आपको दिया है उसमें 12 नंबर पॉइंट मैंने ओबीसी लिख के दिया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ गोवा का इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करेंगे जो आपको करना पड़ेगा, 12 इज नॉट फॉर ओबीसी, 12 इज यूआर, 13 is for OBC. So you will follow what is given in the government of Goa, which is wrong.
बट यू विल हैव टू फॉलो दैट। दोबारा देख लीजिए व्हाट आई एम सेइंग। आपका पॉइंट नंबर 12 और 13 जो आएगा, 12 इज यू आर, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एनीबडी कैन गो एंड चैलेंज इट टुमारो इन द कोर्ट ऑफ लॉ that point number 12 is should have gone to OBC. Government of Goa has given it to UR. लेकिन I am quite certain किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चैलेंज तो वो करेगा, समझ में आएगा तो कोई करेगा नहीं। लेकिन आप देख लीजिए जस्ट टू फॉर अ पॉइंट ऑफ एकेडमिक डिस्कशन। और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे आप उनका नाम उस फॉर्मेट में लिखते जाएंगे जो फॉर्मेट मैंने आपको अभी दिखाया है, जो आपके सामने है। इनफैक्ट यू हैव द फॉर्मेट बिफोर यू। इसी फॉर्मेट में आपको नाम लिखते चले जाएंगे। तो एक बार दोबारा बात करते हैं, ए और डी जब रिटायर होंगे तो हमें कौन सा पॉइंट देखना है? पॉइंट 8 और 9। लेट अस डू दिस क्वेश्चन वंस अगेन। दो लोग जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं 2021 में? तो आप कैसे भरेंगे उस दो वैकेंसी को? 8 और 9। आपके 8 और 9 क्या है? ओबीसी एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना? तो आप दोनों ओबीसी शेड्यूल ट्राइब से नहीं भर सकते तो क्या करेंगे आप? ओबीसी का ओबीसी से ही भरेंगे, शेड्यूल ट्राइब को यूआर ट्रीट करके शेड्यूल ट्राइब को नेक्स्ट वैकेंसी में ले जाएंगे। Am I clear? तो पहले साल आप भरेंगे एक ओबीसी और एक यूआर, उन दोनों का नाम आप यहां पे लिख देंगे 8 और 9 पे। उसके अगले साल आपका ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी आएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस इज ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब बिकॉज़ यू हैव कैरीड फॉरवर्ड द शेड्यूल ट्राइब टू द नेक्स्ट। सो 10th वैकेंसी यू विल फिल अप बाय शेड्यूल ट्राइब। और उसके बाद जब एफ और कोई और आदमी मरेगा तो पॉइंट कौन सा आएगा आपका? 11 एंड 12। अब 12 इज ऑलरेडी यूआर फॉर यू। आप देखिए आपका 12 यूआर है, तो आप इजीली उसको 11 और 12 को ईडब्ल्यूएस और यूआर से भर देंगे। हमारे केस में हमने कहा था नहीं भर सकते क्योंकि 12th पॉइंट मेरा ओबीसी है, करेक्टली ओबीसी होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने उसको यूआर ट्रीट कर रखा है और किसी ने साइन भी कर रखा है सोशल डिपार्टमेंट में। वो जो भी है उस आदमी को जेल होगी, उसने ओबीसी का रिजर्वेशन खा लिया। और ओबीसी कमीशन को पता लग गया यहाँ, तो वो तो इस बात का पकड़ा मचेगा कि कैसे हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं लगा, इन्होंने पता किया। आज सुबह अगर सोशल वर्करों को ये भी पता लगा कि इन्होंने बताया गलती, तो वो तो इसको खा जाएंगे पहले। तो आप अपना नाम छुपा के रखो, अंडरग्राउंड रहो 2-3 महीने आप। Is that okay? शशांक ये कट कर देना बाद में। So is that okay? आपको समझ में आ रहा है क्या करना है? हाँ, माइक होल्ड ऑन। So number 4 was OBC. Number 4 was OBC. Yes. Yes. That person has retired. Number 4 has retired and number A has retired. A is now Yeah. at number 8. आपका माइक को सामने रहेगा। Number 8 is also OBC. Number We are 8 giving one OBC. So what happens to that earlier one? नहीं समझा नहीं, दोबारा बोलिए। Sir, at 4 there is OBC. Yeah. Mr. D. Yeah. Now D retires. Yeah. Now when we are filling 2 vacancies, A and D, in place of A and D, Yeah. we are filling one OBC, And one UR. one UR, Yes. applying that 50-50. Yes. But what about 8th OBC post? That doesn't get carried forward. नहीं हम तो ओबीसी से भर रहे हैं ना ये। और वो पहले वाला गया ना सर? At number 4 has gone, no? हाँ right. So No, but question is नहीं आ that रहा। doesn't get carried forward. Why should it be getting carried forward? Ellipsis. एक साइकिल है ना ये तो। एक बार आपने अगर साइकिल में चाय पी लिया
और चाय पी के चले गए, दोबारा चाय पियोगे क्या? Okay. I got it. Thank you. आप साइकिल, व्हाट इज साइकिल? आपको याद है ना वो एनालॉजी कि हम लोग 50 लोग हैं, वहां पे बाहर 4 कप रखा हुआ है। तो सबसे पहले मान लो आपने अल्फाबेटिकली शुरू करा, तो आप, मैं और सर और मैडम, हम चारों लोग चाय पीने चले गए अल्फाबेटिकली। अब हमने चाय पी लिया, हम दोबारा लाइन में लगेंगे चाय पीने। अब हमारा नंबर कब आएगा? जब सारे चाय पी लेंगे तब नंबर आएगा। अगर हमने ऐसा नहीं करा तो हम पॉइंट नंबर 50 शेड्यूल कास्ट तक कैसे पहुंचेंगे? याद रखिए, शेड्यूल कास्ट को इसमें रिजर्वेशन कब मिल रहा है? एक मिनट लगाइए जरा। शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन 50 पे मिल रहा है, तो 50 वैकेंसी कितने साल बाद आएगा स्टाफ का ड्राइवर में? आप रिटायर हो जाएंगे, 50 वैकेंसी नहीं आएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? इस जो मैंने एग्जांपल लिया है, मान लीजिए आपके पास 7 ही स्टाफ का ड्राइवर है, तो स्टाफ का ड्राइवर में शेड्यूल कास्ट का नंबर कब आएगा? तो कम से कम 30-40 साल लग जाएंगे। 50 वैकेंसी रोज थोड़ा ना आएगा इसमें। ये तो मैंने जबरदस्ती लिखा है 21, 22, 23। इसमें तो एक वैकेंसी 21 में आएगा, फिर जाके 2030 में जाके 2 वैकेंसी आएगा। इस तरह से हम चलते हैं। Excuse me, sir. Yeah. Sir, at 75, if you see that ST is showing 9 and OBC is showing 20, sir. Now, if you look at 74, it is showing OBC 20. Is that correct, sir? As per India? It's for rotation, it is correct. If you show one above, one down, there is no problem. So, why it can't be shown at 75 and 76? Why it is being shown at 74 and 75? I'm just asking you because is it a mistake of OAS? No mistake. In rotation, it doesn't matter whether you show one above, one down. Because in 100 recruitments, you are giving everybody the representation. But when you are registered, when you are calculating, there is no rotation system. So if you have only 74 posts, you will recruit only 8 scheduled tribe, 19 OBCs. No, that at 75, both are occurring. ST and OBC are occurring at 75. So not at 74. you have just given 75 to scheduled tribe, 74 to OBC. No, rather than, no, I'm just asking you, sir, because I don't So know. what is your suggestion? Tell me, then you will I'm understand. asking you, Government of India is also having the same thing, or is it having at 75 and 76? If you give 75, 76, you can give that, but then there is a fight. It is better to give one reservation earlier. So it is given at 19.98 or you have Exactly. given, OBC at 20. So it's Government of India is also the same, sir. The Government of India, forget about Government of India. It is okay. What is the problem? What big mistake are we committing? Tell me. You are giving it earlier, sir. So what? It is better to err on the side of SC, ST, OBC rather than shift it down. So we are giving it earlier. In fact, there is also demand going on that scheduled caste should not be 50. It should be at least at 20 or somewhere. Because scheduled castes are not getting any reservation as per this cycle. So if you forget about the overall philosophy of register roster, such questions will bother us. Whether one up, one down, this will keep on bothering us. It doesn't matter. What is practically happening? When you are making 100 recruitments in this cycle, you have recruited 9 scheduled tribes. Sorry, you have recruited 9 scheduled tribes, you have recruited 27 OBCs, and you have recruited 2 scheduled castes, which is exactly as per the percentage given. So, if you think of the overall macro level, 100 recruitments you do, everybody gets his representation. If he gets one above, one down, it's a quite an unnecessary question, useless question. Is that okay? Any other question on this? Please feel free. So, what is the effect of change in reservation policy? For example, Keep it close, keep it close.
So what is the effect on this change in reservation policy, sir? For example, OBC in Goa has changed from 19 to 27. Initially it was 27, then it became 19, and again became 27. And EWS is recently introduced. Sir, hypothetically, let's say CADA strength is 49. We have reached point, we had already reached point number 79. 70? 9. So 80th point will be for EWS. Yes, yes. At that point, sir. So you change your roster now and write point number 80, 90 and 100 as given here for EWS. Yes. So, but we won't have to calculate shortfall from the beginning. How? No, that is not possible. Yes. Because if you calculate that shortfall, then it will show that in a CADA the shortfall of EWS will be highest. Whereas reservation for EWS has started only from 2019 on. In fact, that OM also says that this 10% has to be applied on the vacancies which have arisen after 1st January 2019. Same for OBC, no, sir, because in 2003 it became 19. In 2014 it again became 27. So there is, in some cases, there could be. There will be these issues, no doubt. You are right. So can we move forward? Okay. Now this was the format. We have just written this format in the understanding that what is the way we have to write the names. So kindly note in the roster before you, you have to write the names exactly as it is given. So up to which point it will go? Up to 100. And therefore you will start again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The same points you will write it. But in the case of registers, you will not write up to 100. It will go on 100, 200, 300, 400. Because in registers, the number of persons will be exactly what they are actually working in the cadre. There, when you go to 100, 200, there are no points. Okay? So, let us take one more case now of a bigger register, when the register would be applicable. So, let us try to work it out for some kind of a system where selection will have to be done. So let us now try to apply this entire concept of rosters, registers in selection of the candidates. Because our ultimate purpose is not to maintain roster for the sake of maintaining rosters. Rosters are an aid for calculating what will be the breakup of vacancies. That is the only limited purpose of registers or rosters. We don't maintain roster just for the heck of it. We maintain rosters or registers when vacancies arise, like they have arisen now. So we can calculate how many will go for SC, ST, OBC. That is the purpose. Alright, like in this example, when 5 vacancies arose, we said 3 will go to UR, 1 to scheduled tribe, 1 to OBC. Kindly note when we did this exercise, in this exercise, there are no points. We did not see any points. Unlike in the small roster when we were checking the points. In the large register, there are no points. Okay? But now we are trying to understand that how do we calculate vacancies we have understood. But how do we select candidates? That is a very important area of reservation. Now, let us say in this example, this small example we are taking, let us keep just two small vacancies. Let us say Government of Goa has advertised 2 vacancies. To begin with, we will take 2 vacancies. And of those 2 vacancies, one is for scheduled tribe and one is for UR. I am taking scheduled tribe because the percentage is very large here. So let us say 2 vacancies of anything, 2 vacancies of data entry operator, or you can take anything, has been advertised. One is for scheduled tribe, one is for UR. So we have to advertise them. When we advertise, we will get candidates who have applied for it. Obviously, you can see when we will advertise, we will have to seek their details. We will have to seek the application form should mention what is their name, what is their father's name, what else should we seek. When we will advertise, what should we seek? His category. Should we seek category or not? Why? Because yesterday there was a question coming up, we don't seek category.
Why should we seek category? Huh? We require them for statistics. If you don't collect this data, how will you know who has joined your organization? Okay. Now reservation is there only for scheduled tribe. So should we ask scheduled caste to give their category? Why? Why should a scheduled caste say that he is a scheduled caste when there is no reservation for him? One is for statistics. Any other reason other than statistics? Huh? Fee relaxation. So I was quite surprised when the madam said that we don't seek category. So if you don't seek category, are you taking also fee from a scheduled caste? You cannot take any fee from scheduled caste, scheduled tribe. So you will not even know if he is a SC or you will not know. Number 3. So the two conditions are we require statistics. We have to exempt them from fee. One more reason we should know this category is, now if a scheduled caste applies in this advertisement, is he entitled to any age relaxation? No. He is not entitled to any age relaxation because in this advertisement, there is nothing which is reserved for scheduled caste or OBC. So if a person applies, a scheduled caste person applies, and the upper age limit for this is, let us say, 35, and the scheduled caste is, let us say, one scheduled caste is 36, and one scheduled tribe is also 36. Scheduled tribe will get age relaxation because there is a reservation for him. But scheduled caste that year will not get any age relaxation because that year there is nothing reserved for scheduled caste or OBC. So if I advertise 2 vacancies here for lecturer, one for chemistry, one for physics, then I will provide relaxation in age only for chemistry because chemistry is reserved for scheduled tribe. So if I don't mark which one is for chemistry is reserved or physics is reserved, how will I give relaxation in age? So I have to also know discipline wise which one is SC, which one is ST. I will have to advertise. Otherwise, when a lecturer applies, I think the upper age limit is whatever. There must be some upper age limit for lecturer. Yes or no? No, he can be any age. What do you mean by government is 44? So that means in government college you are applying age, in other colleges anybody can come. I don't know. You decide. He is saying yes, you are saying no, it has. I don't know. I find it really surprising when government is paying, there has to be some upper age limit. Anyway, so if there is an upper age limit, how do you give relaxation? You can give relaxation to SC, ST, OBC. If you don't collect the data, then you cannot give age relaxation also. So kindly see this becoming very ticklish. So in the data you have to first capture that whether he is SC, ST, OBC or not. If he is an SC, ST, then no fee. I don't know whether there is a different instruction in Goa. Do you take fee? 50%. So how will you charge 50% if you do not know his category? So you have to know his category. Okay? Now, when these persons apply, okay, and the candidates are selected, obviously if these are the candidates who have qualified some kind of examination, whatever you do or interview or written, so you give them some marks.
And marks obtained out of 100 are 99, 98 like this, 96, 97 and 84 like this people are qualified. So obviously when in government or anywhere you are recruiting people, you will recruit them on the basis of marks. You will reduce their merit into marks. Either written interview or only written, whatever is the system you follow. So you will have to select people with marks, but we have an additional problem. We have one vacancy which is reserved. It is not unreserved. If it is unreserved, no problem. We have a reservation also. So suppose this person is scheduled tribe and this person is scheduled caste and this person is scheduled tribe, rest everybody is general. So again there is a problem, we have to be very careful selecting. So which two candidates we will select? No, kindly note, suppose this man has taken age relaxation. The person A, scheduled tribe, he has scored the highest marks, but he has taken age relaxation. So why did you then, without knowing this, declare the result? That means you cannot declare the results unless we know who has taken age relaxation. So if A has taken age relaxation, the game will attack change. A will go against scheduled tribe only. You cannot take him against unreserved anymore. And in that case, B will be selected against your vacancy. And F or E, 84 marks. Who thought he will get a job, he will not get a job. So kindly see, if you do not know, if you do not advertise the breakup, how are you selecting now? So I write once again, if A has not taken any relaxation in age, so you will have to know what relaxations are available to a government servant. In government, you will have to know that. So what are the relaxations available to SC/ST? Tell me. Lower percentage तो सर यहाँ पे जाएगा वो नीचे वैसे ही आ जाएगा. Qualifying examination. So then, if you give a relaxation in qualifying examination, and he scores 99 out of 100 in the final examination, you can't treat him as a scheduled tribe. What other relaxations? भाई बोलिए, ये तो आप ही को बताना पड़ेगा ना. मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बता सकता हूँ. बेसिकली आपने उन्हीं का नकल तो मारा है. एज 5 years for SC/ST. 5 years age relaxation is available to SC/ST. Experience can be relaxed. It is possible that your advertisement says 5 years of experience. This scheduled tribe has scored 94 marks, but he has experience is 4 years. You can relax it. There are some number of attempts which normally UPSC allows for SC/ST. Unlimited number of chances they can take. General can take 6 attempts. So if it is there in Goa Public Service Commission, I don't know. So that is also relaxation. It is possible that this person has stood first in the GPSC examination, but this is his 9th attempt. So that is also relaxation. If he has not taken any relaxation other than fee concession, in that case, A will go towards UR. And once the UR vacancy is exhausted or over, now B will not find a job, C will not find a job, D will not find a job, because the other vacancy is reserved for scheduled tribe. And only a scheduled tribe can come here. So we will go down in the list and find the first scheduled tribe we can find, and he will now go into this post. So E will now go into the scheduled tribe. On the other hand,
availed some relaxation, let us say age relaxation or lower marks, you require first divisions. For others, for SC, STs, you have got 55%. So if suppose his graduation, post-graduation 55%, this is also relaxation. If he has availed any relaxation, in that case, you cannot take him against UR. So he will now occupy the scheduled tribe vacancy. If he occupies the scheduled tribe vacancy, then unreserved will be filled by which person? Second person who is a scheduled caste. Unreserved, anybody can be selected. So whether the answer is A or B or A or E would depend on what? Whether A has taken relaxation. Am I clear? In fact, the fate of Mr. E is linked to the fate of Mr. A. So therefore, never fight with anybody. पता नहीं किसके साथ आपकी किस्मत जुड़ी हुई है. The fate of Mr. A and E are interlinked. If A has not availed relaxation, F will get the job. E will get the job. If A has availed relaxation, then E will not get the job. So what would E like in his heart of heart? E का क्या दिल में ख्वाहिश होगा? यही होगा कि भाई तुम रिलैक्सेशन मत लेना. लेकिन वो उसके हाथ में नहीं है. अगर उसका उम्र निकल चुका तो रिलैक्सेशन लेगा ही लेगा. अगर ग्रेजुएशन में उसका सेकंड डिवीजन था, रिलैक्सेशन लेगा ही लेगा. Am I clear? Anybody has any question? We are taking example with 2 vacancies only. It could be 200 with SC, ST, OBC, EWS, with persons with disability, children of freedom fighters. It can become very complicated. But at this moment, we are taking example of. Am I clear? घड़ी क्यों देख रहे हैं? मैं नहीं देख रहा हूँ. मैं कहाँ देख रहा हूँ? आपको देख रहे हैं. 1:15 बजा नहीं. Am I clear on this or not? Anybody has any question, please feel free. Mike. Sir, what is the status of B if he has availed any relaxation? Sir, in this example, he cannot avail relaxation because there is no post reserved. But you're right. If he has relaxation, he also cannot go into unreserved. But in this example, Yeah, because reservation is only for SC. This you have to keep in mind. So when you are advertising, suppose this example. So you have to also advertise. Scheduled caste and OBC can apply, but they will not get any relaxation in terms of age relaxation, etc. That has to be there in the advertisement. If you don't advertise, then they will apply. And by mistake, you may also select them. Then if you select them, somebody else will not. Suppose you select B, and he has availed relaxation. Then C has not found a job. One who has not found a job will make RTI applications and he will do PhD on reservation. He will understand reservation more than you and I because it is a matter of life and death for him, not for you and I. We are not applying our mind because we are not finding the job. He is looking for a job. So he will ask you 1,000 questions. How you have given relaxation, by which order, which rule, this, that. Sir, already I am going through. One person with disability is doing a PhD on Right. reservation. So these complications will arise, and let me tell you with my experience that once you have recruited him, in India you can't throw him out. He will go to the court will say he did not tell any lie. Did he suppress any information? He did not suppress any information.
It was you who recruited him. So you will have to recruit B also, and you will also recruit C. Total vacancies were 2. So you will be recruiting 3. Then you will go around in the finance department how to create supernumerary posts. They will say we don't know, you consult this man, that man. Then there is the content of case, because you have not recruited him, he will go for contempt. Then your secretary will be called, he will issue a memo to you. This is exactly what happens every day in my office. So one has to be very, very careful when we are advertising. So please see, now I will write it here, that when you are making recruitment, whether it is 2 or 200, there is a very good pattern we should follow. What we should do, whenever we are making recruitment, we should write the total number of vacancies. Suppose it is 20. So we should first see that out of 20 vacancies, how many is reserved for SC, ST, OBC. How we will find it out? Suppose there are 20 vacancies in a cadre. So how many will be SC, ST, OBC? Huh? Huh? 20 post ही बोला है 20 वैकेंसी आया 20 वैकेंसी आया तो कितना SC, ST, OBC को जाएगा? You can't answer this question. You have to first know how many posts are there. अगर 200 पोस्ट का कार्डर है और 20 वैकेंसी आया है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन कौन आप नौकरी छोड़ के गया है जो 20 वैकेंसी आया है। वो जो हमने एक्सरसाइज करा था 74, 75। अगर ये रोटेशन वाला रोस्टर है, तो हमें देखना पड़ेगा अगले 20 कौन सा पॉइंट आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? मुझे पूरा विश्वास आपको समझ में आ रहा है। तो जिस तरह से आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। यू आर लुकिंग फॉर, नो आई एम नॉट जोकिंग, यू गॉट इट। समबडी सेड देयर वी नीड टू नो द पोस्ट। वी कांट आंसर 20 वैकेंसी किसको जाएगा, वी नीड टू नो द पोस्ट। मान लो 200 पोस्ट का कार्डर है, जितने SC, ST, OBC चाहिए उतने बैठे हुए हैं, और 20 के 20 जनरल नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, तो 20 का 20 वैकेंसी कैसे एडवर्टाइज होगा? UR पे। So it will all depend कि कौन नौकरी छोड़ के जा रहा है। लेकिन अगर रोटेशनल वाला है तो हम 20 पॉइंट देख लेंगे, अगला कौन सा आ रहा है, जो भी आ रहा है उस पर एड्रेस करते हैं। You getting my point? I'm sure you getting it. I'm not joking. ये मत सोचिए मैं मजाक कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। क्या आपको समझ में आ गया? ना 20 में से आपने देखा कि 4 OBC को जा रहा है, और मान लीजिए 4 शेड्यूल ट्राइब को जा रहा है, और 12 अनरिजर्व को जा रहा है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है सर? हो सकता है। अगर बड़ा वाला कार्डर है, उसमें से 4 SC गए थे, 4 SC पे कर देंगे। 4 OBC नौकरी छोड़ के गए थे, 4 OBC पे आ जाएंगे। 4 शेड्यूल ट्राइब नौकरी छोड़ के 4 शेड्यूल ट्राइब पे, और 12 जनरल गए थे, 12 UR पे। शेड्यूल ट्राइब कोई SC कोई गया नहीं। हो सकता है सर? ठीक है ना? बोलिए, हो सकता है ना सर? तो अब अगर ऐसा ये ब्रेकअप जब आपका आ जाएगा, तो आप पेपर में भी ये एडवर्टाइज करोगे, वी हैव 20 वैकेंसीज ऑफ दिस पोस्ट, आउट ऑफ विच 4 आर रिजर्व्ड फॉर OBC, 4 फॉर शेड्यूल ट्राइब, 12 फॉर UR. Scheduled caste can also apply, but will not be entitled to any relaxation. Who is entitled to relaxation as per this advertisement? Only OBCs and scheduled tribes. Am I clear? Can an EWS apply? He can apply. There is no reservation, but he can apply. All right. Now, then what you will do? People will write their exam. You will give them marks. So then you will write the marks and the names as per decreasing order. Name, category, whether he has taken relaxation or not, is marks. And that in the decreasing order. 1 minute job, Excel sheet, हमारा descending order will come. After that, decreasing order names are available with you. Start selecting first your unreserved.
Don't start with SC/ST first. And when you are first selecting unreserved, you will start from top, slowly go down. And remember, in unreserved, any scheduled caste, scheduled tribe, OBC can be selected, provided he has not availed any relaxation. Suppose A, you go to the first person, he is A, topper, you select him, you are about to put him into UR, just check whether he has taken relaxation or not. If he has not taken relaxation, he will go into UR. If he has taken, he will be omitted, go to the next person. Don't put him into scheduled tribe immediately. You first select UR. After you have selected all the unreserved candidates, then start with which one? OBC or scheduled tribe? Which one? पहले OBC शुरू करें scheduled tribe से? बारह जब हमने अनरिजर्व ले लिए, उसके बाद ओबीसी सिलेक्शन पहले करें या शेड्यूल ट्राइब का सिलेक्शन पहले करें? हाँ? मैडम क्या फर्क पड़ता है, किसी का भी कर लो। ओबीसी में तो ओबीसी जाएगा, शेड्यूल ट्राइब में शेड्यूल ट्राइब में जाएगा, तो फर्क थोड़ा पड़ेगा किससे शुरू करेंगे। भाई ओबीसी में शेड्यूल ट्राइब तो नहीं ले सकते हम, और शेड्यूल ट्राइब में ओबीसी ले सकते हैं। Then you will select OBC as a scheduled tribe as per your convenience or whatever. अब रिजर्व कैटेगरी का जो वैकेंसी है, उसमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि उस कैंडिडेट ने रिलैक्सेशन लिया है या नहीं लिया है। हो सकता है कि अब आपने ओबीसी में सिलेक्ट करा, सबने रिलैक्सेशन ले रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने भी नहीं लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनरिजर्व में सिर्फ आपको चेक करना है कि whether that candidate has availed relaxation. If he has availed relaxation, he will not be selected in the unreserved category. Am I clear? So please repeat the steps. What is the step number 1? सबसे पहले पेपर में एडवर्टाइज करेंगे ब्रेकअप के साथ, और क्या लिखेंगे, एडिशनल क्या पॉइंट लिखेंगे, या जिसके लिए रिजर्वेशन नहीं है he can apply but he will not get relaxation. उसके बाद जब एग्जामिनेशन हो जाए, मार्क्स आ जाए, सबका मार्क्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है, और सबसे पहले यूआर से सिलेक्शन। इज दैट ओके? एम आई क्लियर? सो टू मच टॉकिंग विल नॉट हेल्प. व्हाट शुड वी डू? एक्सरसाइज. सो कम टू द एक्सरसाइज गिवन on page so and so. How many posts have been created? 70. So that means in the year 2021, how many vacancies are there? 70. Will you make a roster or a register for this? Roster. So please give me the answer of task 1. Very simple. Tell me.
Very good. Scheduled caste 0. Yeah, what you have to do? Simply go up to 17 and check. Scheduled caste 0, scheduled tribe 2, OBC 4, EWS 1. Although the points are there, but you very quickly you can make out. So you go to the point number 1, 2, 3. So if you go to 17, scheduled tribe 2 comes 2. Yes or no? OBC comes 4, EWS gets 1, scheduled caste gets 0. So based on this roster, you will advertise in the newspaper that we have got 17 vacancies, this is the breakup. That breakup must be advertised. Many times people advertise we have 17 vacancies, reservation as per Government of Goa order. No. You have to tell what is the breakup. If you don't, then you cannot select candidate. You need to know the breakup. So what is the breakup? Scheduled tribe 2, OBC 4, EWS 1. How many you are? You will have to also tell how many you are. 10 will be you are. Yes or no? Anybody has any doubt, any question? Now, after these 17 vacancies have been advertised, you will hold your written examination, whatever you do, and then the names of the candidates and marks has been given to me, given to you by me. So you will simply select candidates. You will start with UR, isn't it? So we will do that after we come back from lunch. Okay? So please do it. Everybody has to do it, and then discuss with